Assalamualaikum students. Today our next topic in social studies subject of class 1 is my body, right? My body, मेरा जिस्म। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बॉडी के मुतालिक, ठीक है, कि बॉडी के कितने पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या नेम्स हैं और उनके क्या क्या एक्शंस हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ माई बॉडी, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म है। आई हैव अ हेड, जो बॉडी का सबसे टॉप पोर्शन होता है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड हेड, राइट? आई हैव अ हेड। और हर किसी का हेड होता है, ठीक है। ऑन माई हेड देयर इज़ हेयर, मेरे सर पर बाल है, ठीक है। जो ऊपर वाला पोर्शन है हेड, उसके ऊपर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के लाइक थोड़े से ग्रेश बाल होते हैं, किसी के गोल्डन होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं हेयर। माई फेस इज़ राउंड, ठीक है, मेरा चेहरा गोल है, फेस। I have two eyes and a nose, मेरे दो आंखें, ठीक है, और एक नाक है, ठीक है। अब फेस पे जो है टू आईज एंड वन नोज, ठीक है, उस पे दो आंखें और एक नाक है। आई हैव अ माउथ, आई हैव अ माउथ, मेरे एक फेस पे एक मुंह भी है, ठीक है, माउथ, मुंह। एंड टू लिप्स, और उस पे दो होंठ भी है, ठीक है। आई हैव वाइट टीथ, उस माउथ के अंदर क्या है? वाइट टीथ, सफ़ेद दांत, ठीक है, माउथ के अंदर है सफ़ेद दांत। एंड अ पिंक टंग, और एक गुलाबी ज़ुबान भी है, ठीक है। आई हैव टू चीक्स, मेरे दो गाल है, चीक्स, फेस पे टू चीक्स भी होते हैं, गाल। एंड अ चिन, और एक थोड़ी है, ठीक है, चिन, थोड़ी। आई हैव टू ईयर्स, मेरे दो कान हैं, ठीक है, दो कान होते हैं। आई हैव अ नेक, और मेरी एक गर्दन भी है, नेक मीन गर्दन। ओके, ड्रा अ फेस एंड लेबल फॉर द पार्ट्स, ठीक है। इस ओवल शेप के अंदर आप लोग अपना फेस ड्रॉ करें और यहाँ पे साइड पे उनकी लेबलिंग करें। अब लेबलिंग आप लोगों ने किस चीज़ की करनी है? हेड की करनी है, हेयर की करनी है, आईज की करनी है, ईयर्स की करनी है, ठीक है, नोज, माउथ, लिप्स, ठीक है, चीक्स, चिन, ईयर्स, नेक, इन सब की आप लोगों ने यहाँ पे लेबलिंग करनी है। पहले फेस ड्रॉ करें, ठीक है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स बनाएं, आईज और आई ब्रो, एवरीथिंग, ठीक है, और फिर उसकी लेबलिंग करें। लुक एट हेयर, दिस इज़ द फुल बॉडी, राइट? This is the first portion, the first part of the body, and that is head. That is head. On the head there is hair. Look at here, hair. And this is face. This is face. ठीक है, अब face पे देखिए different parts हैं. These are two eyes. These are two eyes. Look at here, eye. Okay, what do we with eyes? Yes, we see with eyes. हम आंखों से देखते हैं. We see with eyes. हम आंखों से देखते हैं. This is ear. कान, कान, ear. ठीक है, what we do with ear? We hear with our
ears, ठीक है, हम अपने कानों से सुनते हैं, कानों से हम क्या एक्शन करते हैं, सुनते हैं। दिस इज नोज, दिस इज नोज, नोज नाक, ठीक है। वी स्मेल विद नोज, हम नाक से सूंघते हैं, ठीक है। वी स्मेल विद नोज, हमें जब किसी बदबूदार चीज़ की स्मेल आती है तो किस चीज़ से हम फील करते हैं, नोज से फील करते हैं, ठीक है। सो वी स्मेल विद और नोज, हम अपनी नाक से सूंघते हैं। इसके अलावा वी कैन यूज़ नोज फॉर द ब्रीथिंग, हम सांस लेने के लिए भी नाक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, लुक एट हियर, दीज आर चीक्स, गाल, ठीक है, चीक्स। जब हम चूबी चूबी चिक्स करते हैं तो गालों को पकड़ लेते हैं ना, ठीक है, हाँ ऐसे। दीज आर चिक्स। दिस इज चेन, थोड़ी, ये, दिस इज चेन, थोड़ी। दिस इज माउथ, माउथ, दिस इज माउथ, राइट। And what action we do with mouth, we use mouth for eating, ठीक है, हम इससे खाना खाते हैं, बातें भी करते हैं। we talk, हम बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज neck, दिस इज neck, ये गर्दन है, ठीक है, जिसने हेड और बाकी बॉडी को आपस में जॉइन किया हुआ है। Okay, the next one is arm, बाजू, ठीक है, आर्म, बाजू। दिस इज हैंड, दिस इज हैंड, ठीक है। हैंड से हम क्या एक्शन करते हैं, हम हाथों से मुख्तलिफ काम करते हैं, हम इसे राइटिंग भी करते हैं, हम इसे ईटिंग भी करते हैं, हम प्लेइंग भी करते हैं, हम थिंग्स को होल्डिंग भी करते हैं, ठीक है ना, चीज़ों को पकड़ने का काम भी इससे करते हैं। जिस तरह क्रिकेट में हम बैट पकड़ते हैं, ठीक है, बॉल को कैच भी कर सकते हैं हाथों से। ओके, दिस वन इज एल्बो, कोहनी, ठीक है, एल्बो, जो जॉइंट होता है हमारे आर्म्स का और हैंड का, तो यहाँ पे एक जॉइंट सा होता है जिसको कहते हैं एल्बो, हम यहाँ पे टर्न कर सकते हैं अपने हैंड्स को, ठीक है, मूवमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज रान, ठीक है। ओके, नी, जिस तरह एल्बो ने यहाँ पे दोनों को जॉइंट किया हुआ, इस तरह ही नी जो है, घुटना जो है, इसने ते और लेग को जो है आपस में जॉइन किया हुआ है, ठीक है। नी, हम पाँव को बेंड कर सकते हैं इससे। दिस इज काफ और लेग, ठीक है, इसको लेग या काफ भी इसको काफ या लेग भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज फुट, दिस इज फुट, इसको हम रनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, वॉकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। Now let's do the question answer. Question number 1. What parts of your body do you use for running? What parts of your body do you use for running? We use our feet for running. We use our feet for running. What parts of your body do you use for eating? We use our mouth for eating. We use our mouth for eating. What parts of your body do you use for writing? We use our hands for writing. We use our hands for writing. Now the next exercise, fill in the blanks.
This is my foot, right? This is my foot. This is my, yes, hand. This is my hand. This is my ear. This is my ear. This is my nose. This is my nose. Exercise B. What color? This is Sarah. She's Sarah. Okay, look at her hair and eyes. She has dash hair. What's the color of Sarah's hair? Black color. Which one color? Black color. Her eyes are black. ठीक है, उनके जो आई बॉल्स हैं वो ब्लैक कलर में हैं. This is Tim. This is Tim. Look at Tim's hair and eyes. He has dash hair. Sarah hair is black and Tim hairs is golden, right? He has golden hair. His eyes are, look at the eyes color, brown. His eyes are brown, right? Now this sentence is about yourself. My hair is dash. Which one the color of your hair? ठीक है, write down here. My hair is dash. My eyes are dash. ठीक है, आपके हेयर का जो कलर और आईज का जो कलर है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है. Now look at exercise C. True or false? This is Najib, right? This man is Najib. Look at the picture and mark the statement as true or false. ठीक है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और आगे ट्रू फॉल्स है उस पर टिक लगाने हैं. Najib has 3 arms. Let's count it. 1, 2, right? Najib has 2 arms, right? So this is false. He has 2 ears. Look at here. He has 2 ears. This is true. His hair is grey. ठीक है, उसके जो हेयर का कलर है वो ग्रे है. So this is false. Najib's eyes are green. Look at Najib's eyes. This is black color. So this is false. Okay student, this one is also your activity and you people draw your face and label the parts, right, in drawing notebook. ठीक है, सोशल स्टडी के लिए हमने जो ड्राइंग नोटबुक एक्टिविटीज़ के लिए बताई है आपने ये एक्टिविटी उसमें भी करनी है, बुक पे भी करनी है और नोटबुक में भी करनी है. ठीक है, दिस इज़ योर एक्टिविटी. English Sing. Body. This is my body. This is my body. Huh? Let's listen and move your body. Are you ready? Okay, I'm ready. Touch your head. 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 Grab your hair. 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 Touch your ears. 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 Touch your eyes. 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 Touch your nose. 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 Open your mouth. 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 Open more. Click your teeth. 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 Stick out your tongue.
tongue, tongue. Bend your neck. Neck, neck. Shake your shoulders. Shoulders, shoulders. Touch your stomach. Stomach, stomach. Okay, great. Yeah. Wiggle your hips. Hips, hips. Shake your arms. Arms, arms. Shake your hands. Hands, hands. Shake your legs. Legs, legs. Touch your feet. Feet, feet. Perfect. It's all over. Yeah. Review. Head. Hair. Ears. Eyes. Nose. Mouth. Teeth. Tongue. Neck. Shoulders. Stomach. Hips. Arms. Hands. Legs. Feet.